अस्सलाम वालेकुम, good afternoon and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. And our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And today we have another great day of action coming out your way. But before we talk about that, let me bring in my four very special guests, panelists, experts that I have here in the Pavilion. Four former captains of Pakistan, four outstanding minds that analyze games with us here in the Pavilion. I've got first up the young, the very, very energetic, still super fit Captain Pakistan, a great runner between the wicket, a great finisher of games, off-break bowling, middle order batting, and a lot more when it came to fielding. I've got Shoaib Malik. Shoaib, welcome back. Assalamu alaikum and good afternoon. Walaikum salam. Good afternoon. Assalamu alaikum everyone. Next up, I've got Mr. Dependable for the Pakistani batting. Whenever the batting was in disorder, he would bring order to at least whatever he could actually manage on his end. He was one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history. I've got Misbah. Assalamu alaikum and good afternoon, Misbah. Walaikum assalam. Assalamu alaikum to everyone. And with that, I've got one of the most fantastic wicketkeepers of Pakistan. And he kept wickets when the 2Ws operated. He also captained Pakistan, a great runner between the wickets, a man of crisis and the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum and good afternoon. Moin, good to have you. Walaikum assalam. Assalamu alaikum everyone. And finally, ladies and gentlemen, the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders. I've got the ever-shining, energetic Wasim Akram. Good afternoon, Assalamu alaikum, Wasim. Good afternoon, ji. Assalamu alaikum, everyone. This is what we have in store for you. आज का मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. That's the match ident coming up on your screen right now. This is Afghanistan versus Sri Lanka live in Pune. 1:30 बजे आपको इस पे बराह रास्त लेकर चलेंगे. But पुणे से ये मैच आपकी खिदमत में पेश होगा. Afghanistan, well, they've surprised everybody in this tournament. They're looking like a really, really good team. And Sri Lanka has a lot of backup forces that have come into play now. And we're going to talk about that. But first up, Shoaib, welcome back. We missed you. आपको बड़ा याद I किया also हमने. missed you guys. बिल्कुल. In fact, I've seen the show. I know. और मैंने कहा यार. I know. एक बल्कि किसी का ट्वीट भी आया था कल आज पवेलियन में कि चूंकि शोएब मलिक नहीं है तो मोइन भाई को बोलने का मौका मिल रहा है. हमने कहा अच्छा चले ये तो बड़ी जबरदस्त बात है. मोइन भाई पेन की जगह आप टेप भी रख लें. Anyway, a happy birthday to your little man. Thank you. Thank Yeah, Shami, from all of us, happy birthday to little Thank one. you so much, Wasim bhai. 5 years old, mashallah. 5 years old, mashallah. Yeah, they grow up fast. Yeah, time's flying. Yes, time is indeed, it is flying. Afghanistan versus Sri Lanka. Afghanistan have been a great team this World Cup, Wasim. They have shown a lot of grit, a lot of resilience, and a lot of progress in their cricket. Yeah, very impressive. Well done, Afghanistan team, their think tank, their cricket board. Everybody should be enjoying this success. I mean, they won against two big teams in this World Cup. When World Cup से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा अपसेट करेगा. टीम सिलेक्शन उनकी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त थी. जो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया नूर अहमद उसने 3 आउट किए. एंड आई थिंक स्पिनिंग सो फार जो हमने देखा है कि दे रिलाई ऑन स्पिन अ लॉट. सो दे शुड स्टिक टू देयर जो उनका एक स्ट्रॉन्ग ये है स्पिनिंग का. अगर फास्ट बॉलर अगर नहीं आ रहा टीम में ठीक है. स्टिक विद योर बेस्ट playing spinners, and I think Noor is a future star for cricketing world. Yeah, absolutely. Let's talk about what Afghanistan did to England, because England have had a really, really poor World Cup. Everybody's talking about it. The English media is talking about it. In fact, I was looking at a interview as well before starting this broadcast. We'll talk about that. Yesterday, England was defeated by India. ये जरा आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कल का. This is the match summary. कल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग करवाई. 229 for 9 था. Rohit Sharma there, what a captain's knock from him, 87, a very responsible one. He knew that the ball was doing a lot in the beginning, and then he knew that he had to be there to give stability. And then Surya Kumar Yadav coming down the order and contributing a very valuable 49. Rahul there with 39, KL Rahul. But Bumrah, that 16 from Bumrah, that shows that's one of the most important innings in this scorecard, because they made sure that they played out the 50 overs and they put on those extra 25 runs and the last batsmen that were out there from India's side. The bowling card for England, really good bowling card for England. England would be very happy with that performance. But in response, English batting was in complete tatters. It was just a
very, very disappointing all round. 34.5 overs, England were completely dismissed at 129. But look at that. Look at what Shami did there. His ball yesterday was almost unplayable. And then, of course, Bumrah from one end with the new ball, old ball, any kind of ball that you give to Bumrah, he's just, magnificent with it. And Kuldeep Yadav also contributing. India winning that by 100 runs. Points table pe bhi zara nazar dal lete hain, because that changed the way the points table's top end is. Because India now has gone right on top. They've gone to the top. This is phenomenal. 6 games and completely undefeated. 12 points with them. South Africa there with 6 games, 5 wins, 1 defeat. 10 points. New Zealand on the 3rd position with 8 points. Australia with 8 points on the 4th position. Sri Lanka with 4 points in the 5th position. Pakistan 6th with 4 points. Afghanistan with 4 points. Netherlands with 4 points. Bangladesh and England right at the bottom with 2 points each. But England, I mean, that is not a pretty sight for English fans because that England team is the defending world champions. And they've just had a terrible, terrible tournament. But that's how it went down. I think England, we discussed in length last night, England needs to go back on a drawing board and press the reset button. Yeah. Because these players were greats of the game. They give so much joy to English fans and cricketing world. जिस तरीके से उन्होंने white ball को, game को change किया है, mindset को change किया है. But now it's time for people who want to play one-day cricket ODI. ज़बरदस्ती retirement से उसको लाए हैं Ben Stokes को. He didn't look. Obviously, injury problem भी है. People like Ben Duckett, Harry Brook, these are the future for England batting, and I think these guys will be playing regularly from the here onwards. Yes, but how good was India yesterday? Both in batting, they were very, very, they understood the conditions and then they applied themselves. And then in bowling, they exploited the conditions really well, Misbah. बड़ा ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए कि वन डायमेंशनल आप ना हो. आप कंडीशंस जैसी भी हो, आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए, ऐसे बॉलर्स होने चाहिए. बैटिंग में आपके प्लेयर ऐसे हों कि जो उन कंडीशंस को समझें और उसके मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपनी गेम को चेंज करे. ये मेन डिफरेंस कल हमने देखा दोनों टीमों के अंदर. इंडिया फ्लैट पे जब पिच आती है तो डिफरेंटली खेलते हैं. जब थोड़ा सा पिच ट्रिकी आता है तो उनके पास वो दूसरी गेम भी है. कल क्लियरली हमने देखा. फिर जो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जैसी पिच आती है, जैसी कंडीशंस आती हैं, जैसे बैट्समैन आते हैं, वो उस हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज करते हैं. दैट्स वाई दे आर अ कंप्लीट टीम. और मेरे ख्याल में बड़ा ही मुश्किल है इस टाइम पे उनको बीट करना. या मोमेंटम इज इन देयर फेवर. ओवेन मॉर्गन ने आज स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुझसे किसी ने, जब हम जिस फ्लाइट पे टीम जा रही थी उस वक्त मुझे किसी ने बोला होता कि इंग्लैंड जो है वो हाफ वे थ्रू दिस वर्ल्ड कप बॉटम ऑफ द टेबल होगा, तो मैं उसके आई वुड हैव लाफ्ड इन देयर फेस. But now he's actually seeing that has happened. Even for us guys, we thought England were one of the favorites. सारे हम कह रहे थे. How big a shock is it for you, Moin? Did you ever anticipate? हम जब प्री शो किया था, जिस वक्त कर्टन रेजर था हमारे शो का, सब ने बहुत रेट किया था इंग्लैंड को कि इंग्लैंड जिस फॉर्म से आ रही थी, जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट उन्होंने पिकअप किया था पिछले 2015 से लेके अभी तक, फिनोमिनल उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी. एवरी इंडिविजुअल वाज ऑन टॉप. बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. मुझे जो जो मैंने कल भी कहा था, कैप्टन जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जिस तरह उनकी फॉर्म रही है थ्रू आउट जॉर्ज बटलर की, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी बहुत ज़्यादा रन. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थ्रू आउट हमने देखा. जहाँ मैच हारना शुरू हुए वहीं से वो मेरा ख्याल है कि नीचे, तो एक कॉम्बिनेशन जो चाह रहे थे बनाना वो नहीं बन सका. शुरू में ही इतना मुश्किलात पेश आई कि मैचेस हारना शुरू हो गए, तो कहीं भी किसी इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई कि फिर वो दे आर प्लेइंग फॉर देयर, कहना चाहिए कि वो जो प्रीवियसली उन्होंने मेंटेन की हुई थी ऐसी परफॉर्मेंसेस. मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नॉट ओनली इंग्लिश फैंस, पूरी दुनिया के लिए, जो उन्होंने देखा है प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाइट बॉल से की थी. शोएब, इंडिया अभी जिस तरह मिसबा कह रहे थे, इंडिया लुक्स लाइक दे कम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल प्लेयर ऑन द अदर साइड. ऑपोजिशन के एक एक बंदे पे बड़ा मेटिकुलस होमवर्क करके आते हैं, बिकॉज उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि इसको इस तरह सेटअप करना है, इसको ऐसे सेटअप करना है और इसको इस तरह डिसमिस करेंगे. फिर देखें, ऐसी चीज़ें आप तब करते हैं जब आपके इनफॉर्म हो, बॉलर्स हों, बैटर्स हों, और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनको हर कंडीशन में खेलना आता हो. अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं
और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड साइड है। इनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, नॉट जस्ट ODI क्रिकेट, T20 एज वेल एज टेस्ट क्रिकेट। तो ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, नो डाउट वो अपनी होम कंडीशंस में उनको एडवांटेज है। हैविंग सेड दैट, बट दे आर फुली प्रिपेयर्ड, एज मिसबा भाई said कि उनको किसी भी कंडीशंस में आप खिलाएं, दे आर रेडी। Absolutely. With that, we're going to take a break here, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app, our content coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And today we're going to take you to Pune, where we have another great game of cricket in store for you. It's Afghanistan that's going to clash with Sri Lanka. और उससे बात करने से पहले एक इंटरेस्टिंग खबर आई कल। आपने वसीम एट सम पॉइंट आपने बोला था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा जबरदस्त है। कोचिंग के बारे में आपने बताया जो एक्सीलेंस ही चल रहा है जब से इंडिपेंडेंस मिली है, उनको कोई चेंजेस नहीं हुए। एक्सीलेंस का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नेशनल NCA जो है उनका, कि पहले वहां पे राहुल द्रविड़ होते थे। Rahul Dravid, Saurav Ganguly, Ravi Shastri. And then Rahul Dravid went from there to be the head coach of the India team, eventually, right? While Rahul Dravid was there, then he became the coach of under-19. Right, and then went up. And then the A team, वो सारे उसके अंदर थी. And while that was happening, while Rahul went up, VVS Laxman took over that. Yes, he's the So the in charge. news coming out today is that VVS Laxman is now set to replace Dravid as the head coach of India. So that's a kind of a That's what I'm saying, isn't that's like a very interesting thing. Since you have taken Rahul Dravid's name, so we were traveling from Pakistan to New Zealand, and at the same time, Indian under-19 team, it was because he COVID coached. COVID time. COVID के ज़माने में की बात? 2016 की बात है. Right, okay, before COVID. So he coached under-19 as well. Yeah. Indian under-19 team. So I was sleeping and he was the only one who was traveling in business class. So जो under-19 टीम थी वो economy class में थी, तो वो था A380, तो ऊपर वाले floor पे थे. So I sleep a lot in the flight. So I was sleeping, and of course he's one of the great players of cricket. So I was sleeping. He waited for 2 hours कि मैं उठूं because he wanted to talk to me. He wanted to ask me कि यार तुमने इतने comebacks किए, या what motivates you कि तुम वापस आते हो, तो इस तरह की ना, बिकॉज आई एम कोचिंग अंडर-19 टीम, सो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या साइकी है इस चीज़ की। सो बात ये करने का मकसद है कि दैट ईगो नहीं थी उस बंदे में। No, अंडर-19 टीम का ही वाज कोचिंग, सो ही वांटेड टू लाइक लर्न कि मतलब व्हाट यू गो थ्रू। उनके अपने करियर में उन्होंने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, सो ही आस्क्ड मी, देन आई टोल्ड हिम। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात सुन के। तो आई गेस सीखने वाला प्रोसेस नेवर एंड्स, एंड लुक वेयर इंडियन टीम इज स्टैंडिंग। बट द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि उनका जो सेटअप है उसमें ये है कि यू नो एक इधर भी हेवी वेट बैठा हुआ है, एक उधर भी हेवी वेट बैठा हुआ है, बट मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ कि यू नो the talk is that after the World Cup that Dravid is going to, और लक्ष्मण ने ऑलरेडी फिल इन भी किया था इसको कोच ऑफ इंडिया कपल ऑफ टाइम्स ऑलरेडी। सो उसको वो यू नो चांस भी दे रहे हैं वंस इन अ व्हाइल, ताकि वो होगी ना NCA जाएं, वहां पर पहले करें, अंडर-19 को सिखाएं, जाके कोचिंग करें, इंडिया A को कोचिंग करें, फिर आप जाके आपको मेन टीम की कोचिंग जो है वो मिलेगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस प्रोग्रेस। दे आर द ग्रेट्स ऑफ द गेम वी टॉकिंग अबाउट, फ्रॉम गंगूली टू रवि टू लक्ष्मण टू ग्रेट राहुल द्रविड़, ग्रेट्स ऑफ द गेम। इमेजिन ऐसे लोग आपके क्रिकेट देख रहे हैं तो उसका सिस्टम तो बेहतर होना है। with proper power in their hand, decisions वो कर सकते हैं। They don't have to ask 5 रुपए PCB चेयरमैन नो कि यार 5 रुपए के लिए साइन कर दें। They'll have उनका सब एक सिस्टम बना हुआ जैसे हर बड़ी कंपनी का होता है। All right, so let's now talk about the game that we have today. It's Afghanistan versus Sri Lanka. आइए जरा मैच के हवाले से एक फीचर देखते हैं। Well, you heard it there, Jonathan Trott saying no one will take Afghanistan lightly anymore, no question about that. And Matthews here saying that we play our best cricket when our backs are against the wall. This is going to be an interesting contest. We're going to take a break right now. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Today we're taking you for a very interesting game, Afghanistan versus Sri Lanka. अफगानिस्तान के बारे में ब्रेक पे जाने से पहले एक फीचर देखा, उसमें जॉनथन ट्रॉट ने बोला कि no one will take Afghanistan lightly. शोएब, बिल्कुल ऐसे स्पिनर्स अगर आपके पास हों और अगर ऊपर से पहले 3 बैटर्स रन्स बना रहे हों तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी किसी भी टीम को उनको लाइट नहीं लेना चाहिए। So और where do you think they should improve after this World Cup? I mean, they've done great so far, long term. I think they should have couple of more pacers in their side, क्योंकि जो उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उनमें जो लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं, मतलब यंग हैं वो लोग, तो काफ़ी टाइम तक खेलेंगे। और इतना इंजरी का भी
हम वी हैव सीन कि उनको इतना मसला भी नहीं है। मिडिल ऑर्डर इट्स समथिंग जहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। पहले 3 बैटर्स जो हैं उनके कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और वो किसी भी टीम के अगेंस्ट जब उनमें से 2 चलते हैं तो दे आर ऑलवेज इन द गेम। मिडिल ऑर्डर जो है, लेकिन एक जो उनका इकराम आया है विकेट कीपर बैटर मिडिल ऑर्डर में, जो ज़दरान की जगह आया है, वो बहुत अच्छा एक साइन है। और एक उमर जई जो है उनके ऑलराउंडर जो हैं, ये अच्छा साइन है। बट दे नीड कपल ऑफ मोर बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर और 1-2 पेसर्स जो है ना, उससे दे कैन कम्पीट अगेंस्ट एनी टीम इन एनी कंडीशंस। उनके कप्तान भी अभी जो लास्ट 2 मैच खेले हशमतुल्लाह शाहिदी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और जिससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मलिक ने बिल्कुल सही बात की कि पहले इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। अज़मतुल्लाह, उमर ज़ई, ये फिर इकराम अली खेल, इनकी कंट्रीब्यूशन से एकदम उनकी टीम जो है वो उसने पिकअप किया। तो नाउ दे आर अ वेरी गुड साइड, बैलेंस साइड। Well, talking about the side, we have a feature on them. Let's take a look. Well, there you have it. तो मोइन बात कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाने की। देखिए, चांस हो सकता है। जो इक्वेशन इस वक्त बन रही है और जिस तरह कमबैक किया है इन्होंने 2 बड़ी टीमों के खिलाफ, लाइक इंग्लैंड को और पाकिस्तान को जिस तरह हराया है। एक जो बात अभी मिसबा और शोएब कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनको, बट अगर पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो उनके मिडिल ऑर्डर ने आपको जिता दी, यानी 8 विकेटों से मैच जीते। तो आई थिंक उसको ओवरकम करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अगेन जो अभी ट्रॉट से भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि अब ये थ्रेट है दुनिया की जितनी भी टीमें बकाया मैचेस में, तो कोई भी लाइटली नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए। जिस एग्रेसिव अप्रोच से इस वक्त ये खेल रहे हैं, यू नेवर नो, जब आप इस तरह का इंटेंट होता है, आपको अब इतने ब्रेवली बोल्डली डिसीजंस ले रहे होते हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो लक आपको फेवर करती है। तो यार नेवर नो, अगर ये टीम पहले भी बैटिंग करती है और लाइक 250 भी करती है, तो इनके पास इनफ बॉलिंग है जो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी ओपोनेंट को। और इसी तरह अगर हम जो देख रहे थे कि ये टीम अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी इनको चेजिंग के अंदर, तो एक उन्होंने ग्लिम्स उसका शो कर दिया यहाँ पे। तो अब 100% जो इस वक्त है वो तमाम टीमों को थ्रेट होगी। और यू नेवर नो, जिस तरह टीमें प्रोग्रेस कर रही हैं, हो सकता है किसी और बड़ी टीम को आगे बढ़ जाए। बड़ा हॉन्ट कर रही होगी। पहला मैच जो ये जिस किस्म की फॉर्म में बांग्लादेश है और पहला मैच जो ये हारे हैं, ये मेरे ख्याल में अब सोच रहे होंगे कि वो मैच अब होना चाहिए था। उस टाइम पे जो है इनिशियली उनको स्टार्ट नहीं मिला, क्योंकि इतने बड़े मैच 2 जीत गए हैं और बांग्लादेश आउट ऑफ फॉर्म है। And they also have one, probably they'll have one kind of picky selection because आज जो मैच है पुणे है, पुणे is the highest scoring ground, average score is first inning is 300 और 8 मैचों में से 4 टीम वो जीती है जो बैटिंग पहले की है, 4 जीती है जो बैटिंग सेकंड किया। सो इट्स 50-50। सो अब ये देखना है कि जो नूर को खिलाया था उसकी जगह फारूकी को वापस लेके आएंगे कि दे विल स्टिक विद नूर। दैट्स अ बिग डिसीजन दे हैव टू मेक। ब्रेक तो नहीं लेना, ब्रेक तो नहीं लेना, नहीं इजाजत। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इजाजत है। इसमें एक चीज़ है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम ज़रूर है श्रीलंका, और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जो नए हैं वो उस तरह नहीं अच्छा खेलते स्पिन को, क्योंकि अभी मैं LPL में भी देख रहा था और जैसे हम लोगों ने हसरंगा को देखा है, हसरंगा और राशिद जो है वो सिमिलर वो है, क्योंकि हाथ पड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब वो गुगली खेलते हैं या स्लाइडर आता है या लेग स्पिन आती है। तो आज जो है वो बड़ा मज़े का मैच होने वाला है और मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट गूगलीज एंड लेग स्पिनर्स। राशिद खान आज अपना 100th ODI खेलने लगे हैं। दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर राशिद। आई मीन ही इज गोइंग प्लेसेस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट। आप T20 ले लें, आप वनडे ले लें, एंड ही कैन बैट एंड ही इज अ गन फील्डर, अ प्रॉपर क्रिकेटर। ऐसे उसने पूरी टीम को जेल करके रखता है और फील्डिंग में जान मारता है। Yeah, we got a shield there as well from the coach today, Jonathan Trott, giving him his special shield, special recognition. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लोगों को ऐसी चीजें मिलती हैं प्लेयरों को कि उस पर कुछ लिखा होता है, you can keep this as a memory. मैन ऑफ द मैचेस हमें जो मिले हुए हैं उस पर लिखा ही नहीं हुआ
सिर्फ लिखा है मैन ऑफ द मैच, दैट्स इट। मीनिंग कि वो उनको श्योर नहीं होते थे ना कि इतने सारे ग्रेड्स इकट्ठा किए ना, 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 ना। तो किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। भाईजान ने थोक ही लेंदे सन जाके कि बाय वन गेट वन फ्री। वसीम भाई But these are really very inspirational moments here for Rashid Khan. This is, this young man is inspiring a lot of young Afghans to consider cricket, and how a young man from Afghanistan has gone on to become a global icon, especially in अब इतनी leg spin टेंशन bowling. मिलती है क्रिकेट को, सच ए ग्रेट स्पोर्ट, सच ए यूनिक स्पोर्ट, Right. कि अब कोई अपना स्नीज भी करे वो न्यूज़ बन जाती है आजकल। दैट्स व्हाट इट इज नाउ। यू नो 100 वनडे इज 100 विकेटें सबने तेज किसकी की, 1000 रन उसके तेज हुए, उसने 15 अनाज किए, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही होती है आजकल। सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ क्रिकेटर। टेस्ट मैच था फैसलाबाद में, हमारे तमाम प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट करके वसीम भाई को बड़ी ज़बरदस्त रियल गोल्ड की एक शील्ड दी थी हमें। आई होप आपके पास हो अभी तक। या पड़ी है, वो लॉकर में पड़ी है। इट्स दैट बिग शील्ड, सब प्लेयर्स के उसमें नाम है और लिखा हुआ है 100 टेस्ट मैन एंड इट्स 24 कैरेट गोल्ड। Oh, nice. किस लॉकर में पाए? पैन नहीं। We'll take a break, and hopefully maybe in this break I can find out where that shield is. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Airways app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Today we're going to be watching Afghanistan clash with Sri Lanka. अफगानिस्तान की टीम के बारे में हम लोग अभी से कुछ लम्हा पहले बात कर रहे थे, मगर इस वक्त हुआ है वसीम आपके फेवरेट सब्जेक्ट का। It's time for the pitch report brought to you by Onyx. वसीम, Yes. कैसी लगी? It was actually a very good pitch report. Yeah. वो कप्तान रहा है ना खुद फिंच, और recent है, recently retire हुआ है, so it was simple. He said it's a good pitch to bat on. Maybe later on in the game and बाद में जाके ड्यू आती है तो will come nicely on the bat, but over and all turn नहीं होना। ये भी बताया कि 42 अभी तक जो मैचेस हुए हैं 8 उसमें से 42 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली हैं, 11 to spinners, so that clearly shows कि it's a good batting deck, it's not gonna turn. So problem, the question for Afghanistan would be कि किसको खिलाएंगे, या नूर को या फारूकी को, the left arm seamer. But over and all it looks a good pitch, grass nicely rolled in, dry but not very dry, not crumbly, so good ODI pitch. Perfect batting pitch. Yes. Perfect batting pitch. Moin, let me ask you, because since आप की academy भी and you have your own cricket ground that you maintain and keep it pristine, how do you achieve a pitch like this, batting pitch, जहाँ पर बॉल जो है बल्ले पे मोइन की आता हो? पिचेस नहीं है, वहाँ अखाड़ा है पॉइंट। अखाड़ा वहाँ क्रिकेट बड़ी होती है ना, बहुत तो बहुत घास उस अखाड़े में pitches. स्क्वायर Yeah, का yeah. वो It's a tired- it's a tired pitch. फ्लैट स्क्वायर है, बट एवरी संडे वीकेंड्स पे जो मैचेस होते हैं ऑलमोस्ट 200 T20 मैचेस होते हैं, Right. 200-180 रन बनते A हैं month? दोनों टीमों। तो how many games? 4 games a week. अच्छा, 4 games. on the weekend, T20 matches, yeah. So my question here is कि जो क्यूरेटर हैं आपके, जो who looks after the pitches and all that, उनको क्या brief देते हैं आप since you're heading the place? What do you tell him to make sure that they're देखिए, ready? सबसे पहले तो स्पेशलाइज फील्ड मेरी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत ज़रूर जानता हूँ इसके ऊपर। सुल्तान साबरी हिमसेल्फ इज़ अ क्रिकेटर, वो भी लाइक प्रॉपर क्यूरेटर नहीं थे, बट उन्होंने सीखा है टाइम टू टाइम काम कर करके। बट नॉर्मली जो आप पिच बनाते हैं बैटिंग की, उसके ऊपर ग्रास होना एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ऑन दी टॉप सरफेस बट अंडरनीथ रूट्स होने ज़रूरी है, ताकि वो फिर पकड़ के रखती है मट्टी को, तो उसकी वजह से बहुत ही ईजी खेलता है, फिर बैटिंग पिच हो जाता है। और अगर ग्रास नहीं होगी, नीचे अंडरनीथ भी ग्रास नहीं होगी, पानी कम होगा पिच के ऊपर जो अपर सरफेस होता है, तो टूटने के चांसेस होते हैं। टूटने से जितने ज़्यादा क्रैक होंगे उतना ज़्यादा गेंद टर्न होता है, अनइवन होता है, तो आई थिंक फर्म पिच बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडरनीथ जो सरफेस उसमें एटलीस्ट ग्रास की रूट ज़रूर मौजूद हो। वो आप कराची में ऑफ कोर्स मुश्किल है मेंटेन करना, बिकॉज ग्राउंड कम है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल होता है। बट नेशनल स्टेडियम जहाँ पे सीजन में सिर्फ मैच होते हैं, दे easily they can maintain. So let me ask you, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट किया, सॉरी दिस इज ऑफ टॉपिक बट आई जस्ट वांट टू टच इट क्विकली। आपने कहा कराची में ग्राउंड्स कम है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ की आबादी का शहर है, तो ग्राउंड्स क्यों कम है? यहाँ पे तो बहुत सारे ग्राउंड होने चाहिए। ग्राउंड्स कम है, सबको पता है। एक मैंने बहुत से ऐसे ग्राउंड्स में खेला हुआ है जहाँ पे अब घर बन गए उन ग्राउंड्स के ऊपर, वो एमिनिटी प्लॉट्स थे। That's what I wanted to say, कि उधर भी डेवलपमेंट कर दी गई है, और उनको संभाल के रखने के। and that's all illegal development जितनी भी हुई है। We've got Gurbaz with us. Let's listen in. Right, there you have it, Gurbaz here, confident and looking forward to this battle. Reinforcements मंगवा ली हैं श्रीलंका ने बहुत सारी। मिसबा जरा उसके ऊपर रोशनी डालें। मेरे ख्याल में एज द टूर्नामेंट इज़ प्रोग्रेसिंग तो मैथ्यूज़ का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है उनको,
और अभी उनके फास्ट बॉलर चमीरा आ गए हैं जो कि वो मिस कर रहे थे उनको। टॉप परफॉर्मर हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो आई थिंक कि बेहतर हुई है श्रीलंका की टीम वक्त के साथ साथ, एंड नाउ इट्स अ बिजनेस एंड Right. Well, the reinforcements are there for Sri Lanka. With that, we're going to take a break. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A Sports and Sports in the Air by Zap app. And we're getting very close to the action in Pune. It's going to be Afghanistan versus Sri Lanka. Sri Lanka की बात कर रहे थे. Sorry, Misbah, I had to go into a break. But आप बात कर रहे थे about the they've got all the backup now. Reinforcement उनकी arrive हो गई है. Carry on your discussion. Sorry. जी, बात हो रही थी दुश्मंता चमीरा की। लीडिंग परफॉर्मर थे उनके, फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं और राइट टाइम पे मेरे ख़्याल में। और एंजेलो मैथ्यूज़ की जो इंक्लूजन हुई है मेरे ख़्याल में हमने पिछले मैच में देखा है कि एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया टीम के अंदर, एक स्टेबिलिटी है, उनको लग रहा है कि जी एक्सपीरियंस आ गया है। तो ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो भी फ्रीली खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि अब श्रीलंका के लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत है। उनको पता है कि आज का मैच अगर वो जीतते हैं तो दे आर ऑल्सो इन द रेस। तो राइट टाइम पे टीम पिक किया उसने, एंड टुडेज़ गेम आई थिंक दोनों टीमों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आगे हमारे चांसेस बन रहे हैं। आज जो भी जीतेगा पूरा जोर लगाएंगे दोनों। आज जीतेगी जो भी टीम, उसके पूरे चांसेस है आगे जाने के सेमीफाइनल में। Do the toss and do what, Wasim, on this pitch? This pitch, it depends what sort of combination you're going in with, but usually बताया कि 50-50 होता है, but it depends combination का। Difficult to say कि अभी क्या करना चाहिए टीम को। All right, we're going to take you to Pune right now, where both the captains are getting ready to flip the coin. Brought to you by Flip Samsung. Right, जी, पुणे से खबर, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है. What do you think about that decision, Shoaib? आई थिंक जो दोनों को चाहिए था दोनों को मिल गया। एक ने टॉस जीता, वो बॉलिंग करना चाहते थे, दूसरे अगर जीते तो वो बैटिंग करना चाहते थे। तो टॉस इज आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ इट्स स्किल टाइम। अब स्किल पे बात आ गई है और आई गेस इट्स गुड टू सी दैट अफगानिस्तान कैप्टन सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने चेज भी किया पाकिस्तान के अगेंस्ट और आज फिर करेंगे, बट वो ड्यू फैक्टर पे चले गए, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए। और श्रीलंका जो है अगर वो टॉस जीते तो वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे। सो आज की जो बैटल है वो ये है कि एक कंडीशंस को सामने रख रहे हैं, एक अपनी टीम को स्ट्रेंथ जो है वो सामने रख रहे हैं। सो आई गेस वी आर गोइंग टू सी अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स और दोनों के चांसेस है आगे जाने के लिए। तो अब सिर्फ ये है कि अगर टॉप ऑर्डर श्रीलंका का चलता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर अफगानिस्तान बैटर्स टू कम एंड चेज दैट टोटल। और जो ड्यू फैक्टर भी आता है वो 20 ओवर्स के बाद आता है अगर आया तो एक्चुअली तो तब तक जो है ना बहुत सारा मैच जो है वो गुजर चुका होता है। और अगर आप ज़्यादा रन्स बना जाएं बैटिंग फर्स्ट तो आप पे एडिशनल प्रेशर आ जाता है। फिर बेशक ड्यू आए भी लेटर इन द गेम, स्टिल इट्स वेरी हार्ड एंड वी हैव सीन हु ऑल आर विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट। जब बड़ा टोटल लगता है तो वो स्ट्रगल करते हैं। बेशक वो बड़ी टीम जो है वो छोटी टीम के भी अगेंस्ट खेल रही हो, जो हम लोगों ने देखा इंग्लैंड जो है दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान वाइल चेजिंग। सो आई गेस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अगर श्रीलंका ने बड़े रन्स बनाए अर्ली ऑन, उनको उनके बैटर्स ने वो स्टेबिलिटी दी या मोमेंटम दिया मिडिल ऑर्डर के लिए, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और स्पिनर्स भी, क्योंकि वेन्यू ऐसा है यहाँ पे उस तरह बॉल स्पिन नहीं होता, वसीम भाई ने भी बताया, पिच रिपोर्ट में भी ऐसा ही है। तो आई गेस अफगानिस्तान को दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट। ओके, so you kind of disagree with that decision? Yes. And you have a point there. बड़ा स्टेटमेंट शोएब ने पहले भी दिया था जिस वक्त अफगानिस्तान पहले बैटिंग करके आ रहा था। उस वक्त भी मेरा ख्याल है कि सबको याद होगा कि शोएब ने कहा था कि अब जब ये टॉस जीते इनको चेज नहीं करना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये प्लेइंग 11 है श्रीलंका की। मोइन, टेक अस थ्रू दिस। वेल या निसांका, करुणारत्ने, मैंडिस, समरवीरा, असलांका, डिसल्वा, मैथ्यूज, तीक्षणा, रजिता, चमीरा इंडक्ट हुए और मधुशंका। आई थिंक वो एक जो फोर्स कहना चाहिए जो चेंज हुई है अनफिट होने की वजह से, वो एक नज़र आ रही है। अफगानिस्तान, Misbah, take us through. Sorry, Wasim, please take us through. Whatever. Yeah, Gurbaz, Ibrahim, they're looking good. Top three, Hashmat, then obviously Rahmat, Azmat, of course, a couple of all-rounders, keeper batsman, Akram, then Nabi, the off-spinner, Rashid, Mujib as an off-spinner, googly bowler, Naveen, and Fazal Farooqi is back in place of Noor Ahmed.
जो उन्होंने ड्रॉप किया आज बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर द कैप्टन सेड या ड्यू फैक्टर से हुआ कि कल हम वो वेट करते रहे जब इंडिया इंग्लैंड का भी मैच था कि ड्यू फैक्टर आएगा बट वो 35वें ओवर में जाके कहीं पे जाके 30वें ओवर में हमें जिस तरह भी ये कह रहे थे अफगानिस्तान के कप्तान ने ये जरूर कहा है कि वो दे हैव बीन देयर फॉर लास्ट 3 days एंड प्रैक्टिसिंग इन द इवनिंग क्वाइट अ बिट ऑफ ड्यू उसने कहा था स्प्रे भी होगा जिस दिन मैच होता है उस दिन स्प्रे होता है और जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेशन हो यूजुअली तब स्प्रे नहीं होता But we'll have to take a break there, but we'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion, and it's almost action time. Afghanistan clashing with Sri Lanka. मगर इस वक्त हुआ है expert predictions का, brought to you by Express Power. All right, Shoaib. श्रीलंका Sri Lanka. Win? Sri Lanka. Sri Lanka. Wasim? I'll go for Sri Lanka. Misbah? 50-50 ठीक है सही बात है टाइमिंग बहुत अच्छी थी 50-50 लिख दे 50-50 लिख दे 50-50 नहीं एक ही साइड हो सकती फाइन है ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1% ਵੱਧ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरी प्रेडिक्शन है मैं जो मर्जी कह रहा हूँ 50-50 That's not prediction, is That's it? not a prediction. It's 50-50. That's you being his Najumi. अभी पता है अभी बोल देंगे फौरन खाना नहीं मिलना आज हाँ बोल दे 50-50 Just go with 50-50, I suppose. Whatever rocks his boat. I have to write a name here. आपका दिल क्या कर रहा है यार Afghanistan. अफगानिस्तान चलो लिख लो चलो यार श्रीलंका All right, there you go. And that were your expert predictions. And it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, Misbah, इसमें तो कुछ नहीं है, so you have to give me a name. 100% 100%. खुशहाल मेंडिस Wasim? I'll go for the skipper. जो तूने खुशहाल Skipper मेंडिस ले का लिया। I'll go for Sadira. Sadira, okay. उसको गूगल ही समझ में Moin? आता Sadira. Sadira. From my side as well, yeah. Okay. खुशहाल मेंडिस Yeah. And for you, Shoaib? हाँ असलंका Aslanka. Slanka. All right, gentlemen. And those are your players to watch out for. Brought to you by Ufone. Right, so we're almost done for the pre-match. Gentlemen, any final thoughts for Afghanistan-Sri Lanka game? फाइनल थॉट इज टेक छोटी अर्ली रखी भाई, विकेट्स मेरे को मैंने खत्म करना है प्रोग्राम. तो पर पूछी क्यों रही हो अरे श्रीलंका के लिए I'm in that zone where I have to kill a little bit of time and I have to take you out. श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पूरे 50 ओवर्स खेलें. अगर Yeah. कहीं भी आउट हो गए जल्दी तो अफगानिस्तान को एडवांटेज चला जाएगा. Yeah, so play the full overs out. वाह 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 मोइन भाई वाह Time kill करना था Absolutely. यार. You know Time what? kill करना Yeah, I think it's lunch time for us here, ladies and gentlemen. Thank you, Shoaib. Thank you, Time kill Moin. करना है तो Thank you, ऐसी Misbah. फजूल बातों And में बेहतर thank cricket you, की आदमी Wasim. बात कर ले. And बच्चे जो हैं वो काबू से बाहर निकल गए हैं. I'll have to let you go now, guys. We will see you at the other side of this game. Best luck to both the teams. See you later.